হয়ে গেল। এবং আজকের শেষে আমি যা জানি, আফটার দ্য এন্ড অফ দিস ডে ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 16,40,000। প্রতিদিন এখন 50,000-এর উপর করে করোনা আক্রান্ত লোক হতে থাকছে এবং প্রতি দুদিনে প্রথম 1 লাখ আমাদের পৌঁছতে প্রায় জানুয়ারি 30-এ আমাদের প্রথম করোনা পেশেন্ট ডিটেক্টেড হয়েছিল কেরালাতে। তারপরে মে 19, এই এতদিনে মে 19-এ গিয়ে আমরা 1 লাখ আমাদের কনফার্ম কেস হয়। মে 19 থেকে আস্তে আস্তে উত্তর এটা একটু বেশি রেটে বাড়তে থাকে এবং বর্তমানে যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, এটা দুদিনে এখন 1 লক্ষ করে করোনা আক্রান্ত রোগী হচ্ছে। এবং এটা আমরা যে যতখানি টেস্ট করতে পারছি এই মুহূর্তে প্রতিদিনে 4.5 থেকে 5 লক্ষ লোকের টেস্টিং সম্ভব হচ্ছে। সেই টেস্টিংয়ের এগেনস্টে এটা হচ্ছে ফিগার, প্রায় 50,000 লোক আক্রান্ত হচ্ছে। তো গতকালের ফিগার হচ্ছে 56,000। আর এইরকমভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটাই শুধু রে অফ হোপ, যেটা আমাদের রিকভারি পার্সেন্ট এই মুহূর্তে 64%, আর আমাদের ডেথ পার্সেন্টেজ 2.2%। ডেথ পার্সেন্ট বিগিনিংয়ের থেকে 6 থেকে 7% ছিল, আস্তে আস্তে 3-এ নামে, 3 থেকে আবার দু একদিন 3.2 হয়, 3.2 থেকে আবার উত্তর কমতে এই মুহূর্তে এটা 2.23 লেভেলে আছে। আর রিকভারি লেভেলটা 64%। দু একটা জায়গাতে রিকভারি পার্সেন্টটা খুবই ভালো লেভেলে চলে গেছে। এই মুহূর্তে আমি দিল্লির কথা বলছি, দিল্লিতে এটা 89%-এ চলে গেছে। দিল্লিতে 1,33,000 আক্রান্তের মধ্যে এখন মাত্র 10,000-এর উপরে অ্যাক্টিভ পেশেন্ট। তো এই নিজে সমস্ত কিছু লেটেস্ট ব্যাপারগুলো নিয়ে আপডেটেড থাকে। তো আমরা আজকে এরকম একটা সুযোগ পেয়েছি। পরশুদিন আমরা নিচে রাস্তায় আলোচনা করছিলাম, সেই সময় আমরা সবাই ওনাকে রিকোয়েস্ট করি যে আপনার একটু অভিজ্ঞতা আমাদেরকে শেয়ার করুন এই ব্যাপারে, আমাদের কিছু টিপস আমাদেরকে দিন, যাতে আমরা সুস্থ থাকি, আমরা এখানে ভালোভাবে কাটাতে পারি। ডাক্তার প্রশান্ত, প্লিজ। নমস্কার, তো গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। চেষ্টা করবো বাংলার মধ্যে বলতে, কিন্তু আমার অত ভালো নয়। বাংলা মিক্স হিন্দি ইংলিশ করে আমি বলি, হ্যাঁ, এনি ল্যাঙ্গুয়েজ। তাহলে so today we are, therefore the whole world is talking about only one thing. We have forgotten everything else. Heart attacks have come down, strokes have come down, cancer no one is dying of. Everything, all worries, everything has gone down. Sir is also there, our expert. So we are only talking about one thing. There is only one disease, that is COVID. So COVID, so I don't want to brief you from the beginning because everyone is aware. The news channel, everyone has given you enough feeds, enough knowledge about the basics of it. It's a viral disease. We all know it's a viral disease. The word viral we also use in English. Something which spreads so fast, known as viral. So this also spreads so fast. There are thousands of viruses in the environment. There are so many viruses in the environment. Some few cause serious illnesses, few causes mild illnesses. So why we are worried about this particular virus? The same thing, if you remember, in 2008 we were worried about swine flu. Those kids who are studying or working in Pune and Bangalore, they'll definitely remember because it spread so much in Pune, Bangalore area. কি ওখানে খুব ভয় হয়ে গেছিল সোয়াইন ফ্লু করে। কিন্তু আজকেও সোয়াইন ফ্লু আছে। টুডে অলসো উই হ্যাভ সোয়াইন ফ্লু। উই গেট সো মেনি কেসেস অফ সোয়াইন ফ্লু between October and February. But we are not worried about swine flu now because we have vaccine, we are immune to it, and cases have gone down. So the same thing, this coronavirus, it's a new virus. We don't have immunity towards it, we don't have knowledge towards it, we don't have vaccine towards it. That's why it is very important. So there are bad things about this virus and there are good things about virus. So bad things, like this infects so many people. It's very infective. But then good thing is that the mortality is lesser than the other viruses. So that is a good thing. Even every life matters. Every life matters, especially for doctors like us. Every life matters. But then at least we can say that it is killing less people than other viruses. We have seen other pandemics also in the past. They have killed many more patients than compared to this virus. With due respect to everyone who has suffered due to this virus. So now coronavirus today is present. आज
30th of July, where do we stand? So it's a pandemic. Pandemic means it is present in every corner of the world. There is no denial कि नहीं होगा, मुझे नहीं होगा, मेरे घर में नहीं होगा, ऐसे impossible. It is present in every corner of the world. That's why we call it pandemic. First of all, so where does India stand? India is suffering the greatest at this moment, almost in tandem with USA. Almost in tandem with USA, but little lesser than USA. But then it's spreading very fast now, and the infection rates, we are doing more tests. That's why we see more numbers. But the numbers are much more than we test. Don't worry about numbers. Numbers are always scary. For example, if you collect a data tomorrow that how many people in Durgapur has loose motion, you will be worried. अगर 5000 आदमी को लूज मोशन होगा तो आपको कुछ भी खाने में डर लगेगा, और बाप रे बाप लूज मोशन में किसी बीमारी चली। तो एनी सर्विलेंस will give you a scary picture. First of all, if you do a surveillance for hypertension, you will be scared. बाप रे बाप दुर्गापुर में 25,000 आदमी हाइपरटेंशन का है, इधर हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है. If you do it for diabetes, you will be scared. बाप रे बाप यहाँ पे 1 लाख आदमी डायबिटीज़ का है, यहाँ मतलब डायबिटीज़ ज़्यादा होता है. So any surveillance numbers will always be scary. But nevertheless, this flu, this viral flu, the what we call that seasonal flu, we see approximately 35 to 45 lakh cases per year in the season from October to February. So that is also scary, 35 to 45 lakh cases per year. But we are not worried because हमारे पास immunity है, हमारे पास दवाई है, it does not kill many people. So सर्दी जुकाम हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत लिया and then we are on our job. But coronavirus, we are worried because we don't have immunity, we don't have medication, short medication, we don't have much knowledge about this disease. Whatever knowledge is coming to you, उसने वैक्सीन बना दिया, उसने दवाई बना दिया, उसने ये बन दिया, everything is trial. Until unless we have tried something on more than 1,000 patients, we cannot call it a sure shot drug. Till now, no one has tried anything on more than 1,000 patients. So we don't have drug as such. We have our experiences. हम ये इतने में दिया, ये काम किया, सो ऐसे करके वो हुआ. सो वो हमारे पे छोड़ दीजिए, विल ट्राई दैट कि क्या देना है क्या नहीं देना है. आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ द ट्रीटमेंट अबाउट इट. बट देन नाउ हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस डिजीज. सो द फर्स्ट रियल क्वेश्चन इज कि कैन यू गेट आउट ऑफ दिस डेंजर. व्हाट शुड यू डू कि आपको हो ही नहीं. तो दिस इज नथिंग लाइक दैट. अमिताभ बच्चन को हो सकता है, हु इज हु ऑफ वेस्ट बंगाल, अदर स्टेट्स, they have got it, so even we all are at greater extent. हम लोग तो फिर भी बाजार जाते हैं, they even don't even go to markets. So this public exposure is zero for them. Amitabh Bachchan, I'm sure public exposure is zero for them. He only meets a selected number of people. He also got. So there are so many other people. So like that, so we all are equally exposed. You have equal chances of that. You cannot stop corona from coming to you because it's a virus. If this would have been a lion or tiger, you can see coming and then you can hide behind the tree. But virus, how can you evade virus? How can you expose? So only thing which will save is your own body, your own protection, your own sanitation, your own immunity. So be extremely careful. Now I see people are more than them. What they are doing, they are worried about what the other person is doing. Impossible to control. Impossible to control. 80% of corona patients are asymptomatic carriers. They will not have fever, they will not have sneeze, they will not have cough, they will look like a healthy person. 80% of them are asymptomatic. How do you identify? You go for vegetable, you go for fish, mutton, chicken, what not. How can you check everyone's status? Impossible. Impossible. If Amitabh Bachchan would have called you to his bungalow, you would not have said no. You would have definitely gone and met him. अमिताभ बच्चन देखे से करके सेल्फी वेल्फी खिंचा के अपना मस्त वो करके, लेकिन देन यू आर एक्सपोज. सो यू कैनॉट अवॉइड दैट. इम्पॉसिबल. यू से कि हम घर में ही रहेगा, ठीक है, मान लिया एक दिन तो मेड आएगा, कभी एक दिन तो कोई आदमी आएगा खाना लेके, एक दिन तो सब्जी लेके आएगा. 6 months 7 months इज ए ह्यूज पीरियड. 15 दिन का बात हो तो यू डोंट सी एनीवन, बट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एक्सपोज. कभी बिजली चला जाएगा, कभी पानी चला जाएगा, कोई तो आएगा फिक्स करने के लिए. सो यू शुड नॉट वरी टू मच अबाउट दैट. यू शुड बी वरिंग व्हाट यू आर डूइंग. सो व्हाट यू शुड डू.
তো আপনাকে প্রথম আপনার প্রোটেকশন ইমিউনিটিটা ভালো রাখতে হবে। ওল্ড এজ পিপল, I see lots of old age people in this society. Need not worry. If your immunity is okay, that's not like old age को हुआ तो यही होगा, ये वैसा है, कुछ भी नहीं है. Just out of, say if you are diabetic for example, if your sugars are well controlled, nothing to worry. हम डायबिटिक है सोच के वो डरना नहीं है. आपका डायबिटिक होने दीजिए, अगर आपका शुगर्स कंट्रोल है, दैट्स ओके. That's you are at equal risk with anyone. So your immunity is going to save you. Then you should wear mask and all when you come. All social distancing, everything has to be maintained. Regular hand washing. Hand washing also should be, say ki in a proper way. Say ki good foam is required. This virus has a fatty layer outside it. So you require lots of foam to kill it. To break that fatty layer, then the virus will be killed. So good amount of foaming is required. Just touching the soap and washing is not. Good amount of foaming and all that. Hand washing technique, I'll just briefly tell you. So that every corner of the hand, all that is covered. So make sure every corner of the hand, try to wash it till here. Try to wear full sleeves. Try to, when you come out from outside, you try to open your shirt or clothing, because there is virus shedding. If virus is there on the sleeve, when you open it, there will be virus shedding in the air in that one. So you try to do it in an open air, first of all in the room where it is go, or otherwise what you do is you can open it in a closed room and then tie it in on a hanger somewhere. Viral shedding is very, very common, and this is very important. Or even you can do it outside also. Outside clothes, you can put a hanger outside, and then we can put it outside, leave it like that. While going, we'll just wear that same cloth and we go. So this is one thing which you can do. Now mask. So mask, different people are wearing different masks. So which mask to use, which mask to use. Something which covers your nose, mouth completely should be sealed. It should not be airly. When you're walking alone, you can remove the mask, because wearing mask for a long period of time continuously is not good. Mask with this valve. Madam is wearing, sir is wearing. So this valve wala mask will not work, because this is protected for you, but this is not protecting others. Because when you are exhaling, it is transmitting whatever you are exhaling. So that is not good for you, yes, but for others it's not. तो मास्क जो है वो विदाउट वाल वाला पहनना है. दिस मास्क इज नोन एज रेस्पिरेटर. दिस इज नोन एज व्हेन यू एक्सरसाइज, व्हेन यू आर इन हेवीली पॉल्यूटेड एरिया एंड यू वांट टू एक्सरसाइज, देन दिस मास्क वर्क्स. और यू आर वर्किंग इन अ पॉल्यूटेड इंडस्ट्री, देन दिस मास्क इज ओके. बट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस मास्क इज नॉट. So we should not use the mask with the valve. Simple thing, for the benefit of others. And while walking, if you really want to wear a mask, this is the mask to wear. If no one is there, you want to wear the mask and walk, this is the mask. But then otherwise, for this general purpose, we should not. Sanitation mein hand washing is much better than the sanitizer. So if you have a good soap in the sense any soap for that matter, which can provide you lots of lather, lots of foam, then that is okay. You don't have to go for high funda, medicated, ये वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं. ठीक है. Include vitamin C in your diet. Vitamin C, include one Mosami is enough for providing 1 RDA per day. 1 Mosami per day. If you cannot take it, then you can take tablets of vitamin C 500 mg once daily for 15 days is okay. Vitamin D3 should be good. Take some multivitamin with zinc in it. Some Zincovit or A to Z or something, matlab where zinc is there, 10 mg zinc will be provided. Because if someone is infected, we give higher doses of zinc. But for general immunity, general okay, 10 mg is good. Just for how many days? You continue it, take it for. But vitamin C for 15 days is okay. And vitamin D3 you can take for once weekly dosing for 8 weeks. 8 weeks. 8 weeks. Once weekly dosing. So you check your vitamin D3 level. And after is D. Uprise D is the capsule. I cannot take the names of the brand, but if you want me to take, the best one is Depura. Depura liquid, 5 ml liquid, you have to take at once. This much bottle comes. That is a Sanofi ka research product. That really helps. So that is one thing. Now, if
फॉर एग्जाम्पल गॉड फॉरबिड अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो क्या करना है. सो अगर इन्फेक्ट हो जाए विच इक्वल चांसेस है. अभी जैसा स्प्रेड हुआ है वो मतलब कि एवरीवन हैज इक्वल चांस. लेट्स बी वेरी रियल. आप कितना भी वो करिए वो नहीं होने वाला है. यू हैव वेरी चांस. तो उसके बाद अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो इन दैट केस यू विल हैव टू सिचुएशंस, सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक. एसिम्टोमेटिक है, पॉजिटिव है, 14 डेज तक आपको कुछ नहीं हुआ, नथिंग टू वरी, फॉरगेट इट. जस्ट दैट यू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली or anyone who is staying. That's all. You don't have to do anything extra. Don't panic. Nothing will happen. But if you are symptomatic, symptom में what is your degree of symptom? So mild, moderate, severe. So we have our consultants where we can consult you through the video conferencing or all those factors where you can consult the doctor. We are doing this for the society. Even if we don't work for 1 year, we will not die of hunger. I am repeating it. So whatever we are doing, not for money, rather for the service of society. Because the situation is very, very bad. You know what government has arranged for you. Everyone is aware. All throughout the country, not one state. All throughout the country. So this is the time when we have taken the risk and going and even treating the patients or even offering our services to them. 90% clinics are closed. Hospitals, every hospital, whoever is treating COVID has lots of COVID cases. ठीक है? So these kind of things are happening. So we doctors or healthcare workers have come forward to help the society. We can also lock our door and sleep for aram se for 2 months. Nothing will happen. Jolly well we can aram se we can. Once this settles, then we can start practicing. But we have taken the risk. So in that case, we also want respect from your side, a reciprocation from your side. Because, for example, I am telling you very frankly, if someone gets infected and the patient is symptomatic, then you will realize what to do. Nothing. Nearest metro city is Calcutta. Full. There is absolutely no beds. आप call कर लीजिए randomly any hospital, nothing is there. If you manage to get a bed, huge amount of money has to be deposited and the cost will be very high. That also not everyone will get a bed. So we are in a difficult situation altogether. So if you get in touch with one of us. Testing is very easy. The sampling is very easy. We'll sample you and or maybe wherever you want to get sample. सैंपल करके अगर पॉजिटिव आता है, लाइक आई सेड, अगर सिम्टम नहीं है तो आप अलग हो जाइए. दैट्स ऑल. 14 दिन आप जो है अलग हो जाइए. नथिंग. पॉजिटिव होने के बाद सिम्टम जो आता है दैट इज विद इन द 4 to 5 days ऑफ इलनेस. मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल गेट. There itself testing is done or they send it to Sanaka? Sanaka, we are forced to send to Sanaka by government, but we can also send to private laboratories It like. takes 2 days. Now it is taking 4 to 5 days. I don't know. That's why I said the government, I don't know what they are in. The city has a bed for COVID patients. Sir, currently we don't have, but we are accommodating lots of patients. We have segregated, it's a huge hospital. Certain area has been segregated for COVID patients. You have to do this service. You cannot escape this. Whole world is doing it. और ऐसा नहीं कि IQ सिटी में अगर कोविड ट्रीट हो रहा है तो पूरा कोविड हवा में होगा, ऐसा नहीं होता. It does not happen like this. I have a profession in IQ. सर पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए वो. हाँ बस मैं just completing. So if you get infection, you will be symptomatic in first to 4 to 5 days. Maximum 7 to 8 days. Rarest of the cases 10 to 11 days. तो अगर 10 से 11 दिन सिम्टम नहीं हुआ है तो आप भूल जाइए कोविड हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, भूल जाइए. ठीक है ना. अगर उसके और उसमें जो few cases like sir said approximately 2.5 is mortality. So few cases will go into complication. We really don't know who will go into that. We cannot from the beginning. We can say there are lots of patients, even healthy patients are getting away with it, or even with the lots of comorbidities patients are walking with it, nothing happens. तो ऐसा है तो उसमें हम लोग पहले से वी कैन नॉट से. नाउ थिंग इज दैट कि व्हाट लाइक आई सेड, सो द रियल पिक्चर इज एनीवन कैन गेट अफेक्टेड. सो इफ यू गेट अफेक्टेड सिम्टम्स एसिम्टम्स, बट ओनली थिंग विच इज कॉमन फॉर एवरीवन इज दैट यू मस्ट सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम सोसाइटी. इधर आप अपने घर में ही कर सकते हैं. नाउ गवर्नमेंट सेज होम आइसोलेशन इज ओके. एसिम्टोमेटिक पेशेंट की नथिंग. इफ यू हैव a separate bathroom, separate utensil and separate entrance for your room, that's okay. You don't have to do anything extra, है ना. So
थिंग्स लाइक दैट यू हैव टू डू. एंड इफ यू आर सिम्टोमेटिक, सिम्टम में क्या होगा? फीवर होगा, हेडेक होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग हो सकता है, लूज स्टूल हो सकता है, सांस का तकलीफ हो सकता है, जिसमें ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस आर ड्राई कॉफ एंड ब्रेथलेसनेस, जिसके लिए यू शुड बी वॉचफुल. पल्स ऑक्सीमीटर, गुड क्वालिटी पल्स ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, दैट्स ऑल यू हैव टू डू. तो ये सब करने से ठीक रहेगा. यू कैन गेट इन टच विद द डॉक्टर्स, नथिंग टू वरी, बट ऐसा. लेकिन यू डोंट ट्राई टू स्टॉप कोरोना, नहीं होगा. इट्स अ वायरस. It's a very, very small virus. You cannot stop it. You just keep yourself healthy, protected and informed. Medicine wise, we have few medicines which has worked really well. That's a good news. So far जो हमारा experience रहा है, there is an antiviral drug which has worked wonderfully against this virus. So I am very hopeful for that particular drug. Whomever we have given, they have recovered very well. तो काइंड ऑफ आई फील कि इंडिया के लिए एंटीवायरल ड्रग है हमारे पास. बहुत सारा ड्रग है, उसमें से एक ड्रग है विच हैज वर्क वंडरफुल. आई कैन नॉट कॉल इट हाँ दिस इज द क्योर फॉर दिस डिजीज और कंट्रोल फॉर दिस, बट इट हैज वर्क डेफिनेटली वंडरफुल. आई एम फॉर सॉरी नहीं HCQS नहीं. तो यही है सर. और एनीवन वांट्स एनी क्वेश्चन और समथिंग? यस सर प्लीज. एक एक करके पूछो. Now, yes, definitely, doctors fraternity and service providers like sweepers and those who are working. From the very initial days, we are calling them gods in white dresses. And I do admit that. Now, coming to this coronavirus infection, I am not worried about getting infected. I know I will not die. It's okay. But once the message goes to the society, the reaction I get, I am afraid of that. Right. This is the Because stigma around. because now from government side also, from the society side also, suppose she gets infected, I will be isolated, she will be isolated, will not be able to do anything. How do I cope up that situation? And society will also not accept me. Right. So this is definitely more than the disease. Now I also faced it recently. My father was diagnosed and then he was all right. He was almost asymptomatic. 2 days में he became negative also. He went home, his native place. All those things. My family, what they have to go through, it was absolutely unexpected. हम लोग को बहुत ही तकलीफ हुआ. लोगों का attitude was very poor. मतलब almost मतलब kids cried, बच्चे रो रहे हैं. और मतलब वो जो भी वो किया situation, they will not be just sleeping peacefully. And that I'm telling you, because if you see those kids crying for no fault of theirs, it's very disheartening. So this is what is associated with this disease. ऐसा कुछ भी नहीं है. You don't have to do that. I'm telling you, you cannot stop from corona from coming to you. Impossible. It's a virus. It's not a lion. It's not a tiger. It's a virus. और जब अमिताभ बच्चन का फैमिली, I'm sorry to take names, but then if उसके घर में है तो यहाँ क्या, ये क्या है? What is this? What is your message to residents? Resident, please don't do that. Anyone can be affected. और ये करने से किसी को कुछ नहीं होने वाला. I'm telling you very frankly. I think mindset should be shifting. Mind should be shifted. You should. So one more thing. So on your How you can ensure that I am an asymptomatic? Or 80% cases I cannot say. So that means, and you are not suggesting that we people, those who are not having any symptom, should not go for testing. No, you should not. Should not. No, should So not. after doctors' instructions only this Yes. can be If you are no point testing everywhere, you cannot. There are 130 crores. How can you test 130 crores? sir, But at if I do not present, go for testing, sir, I want then one my thing. confidence level is enhanced if I go for testing. No, actually it is. No, testing is so another thing about testing. So what testing is being done is RT-PCR, the gold standard आज की डेट में है. ठीक है ना? RT-PCR is कि they see, I'll just try to simplify it. Say they take one sample, उसमें वायरस का DNA, RNA कुछ दिखा, उसको they multiply into 1 lakh copies and machine detects it positive. है ना? So this is one thing. So DNA, RNA उसको मल्टीप्लाई करके 1 लाख कॉपीज एंड देन मशीन डिटेक्ट्स इट एज पॉजिटिव. हाँ है करके. लेकिन दे डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन लाइव एंड डेड वायरस. सो इवन डेड वायरस इज देयर. से कि किसी को इन्फेक्शन हुआ, वो क्योर हो गया, दे कैन बी
दे कैन बी पॉजिटिव फॉर क्वाइट सम टाइम, बहुत दिन तक उनका पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि डेड वायरस अगर है तो मशीन उसको मल्टीप्लाई कर दिया, डीएनए आरएनए तो ऐसे खत्म नहीं होता है, तो वो मल्टीप्लाई करके हमेशा एवरी टाइम दे विल शो एज पॉजिटिव. तो टेस्टिंग इज नॉट ओनली टेस्टिंग फॉर एनी इन्फेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कल्चर. जो कल्चर कराते हैं, एवरीवन इज मस्ट बी अवेयर ऑफ यूरिन कल्चर, सबका कोई लेडीज का या जेंट्स का बड़ा यूरिन कल्चर. तो यूरिन कल्चर में क्या करते हैं, कॉफ कल्चर करते हैं, बहुत सारा कल्चर करते हैं, ब्लड कल्चर करते हैं. उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो बैक्टीरिया को देखते हैं एंड वी सी देम ग्रोइंग, देन दैट इज लाइव बैक्टीरिया, दैट इज लाइव इन्फेक्शन. सो दैट इज द फॉर एनी इन्फेक्शन दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड वेयर यू कैन सी द वायरस, और उसको बढ़ते हुए देखेंगे हम, ये वायरस इतना बड़ा हो गया, 1 से 10 हो गया, 20 हो गया, मतलब वो लाइव वायरस. वो वायरस में अभी वायरस आइसोलेट नहीं हो पाया. अच्छा, रूटीन. मेरा एक क्वेश्चन है, अभी हम लोग का ये सोसाइटी में ये है रिस्ट्रिक्शन है कि आउटसाइडर को नहीं आना है. हाँ. तो उसी में बहुत रेसिडेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हम लोग अलाउ कर सकते हैं कि नहीं अलाउ? सर वही आपको अपना प्रिकॉशन रखना होगा. तो आउटसाइडर आ सकता है ना? आउटसाइडर तो आएगा ही ना सर. आपका जो मेड आता है, आपका जो मेड आता है वो कहाँ रहता है, आप जाके देखिए. तो उसी रेस्ट्रिक्शन का कोई जरूरी नहीं है. मेड को आप आने दे रहे हैं बिकॉज दैट इज योर कन्वीनियंस, उसके बिना आपका घर नहीं चलेगा. लेकिन मेड किधर से आ रहा है वो देखिए, मेड किधर से आ रहा है. Restriction is not required. IQ City is the only real facility you have. Only IQ City is the real facility. I am telling you, and very confidently that is the only, because our chairman also wanted to do this service for the community because. Continue or this will again close down like other hospitals? No, we don't have whole hospital for the patients. We have only certain ICU isolated closed rooms where we can keep. Approximately we can accommodate 30 patients. That's all. 30 patients. Not more than that is also full. Also ventilator? वेंटिलेटर वी हैव एनफ वेंटिलेटर. ज़्यादा पेशेंट को तो लगता नहीं है सर, तो जितना लगता है उतने के लिए है. अभी तक तो हमारे पेशेंट को किसी को वेंटिलेटर नहीं लगा. सर सपोज कोई गया उधर पॉजिटिव आया, आपका बेड फुल है, तो वेयर यू गो देयर? दैट इज अप टू यू सर. ये बेड will decide. The police has to decide or who will decide? नहीं पुलिस नथिंग. अभी जो पुलिस कोई आपको पीछे नहीं, इतना केस हो गया ना, दे कैन नॉट हैंडल यू. No, Simple. nowadays government of India has given a circular for a gated residential complex. They should make safe Isolation room, place. सेफ होम safe room in their community, Let me particular finish, community. हाँ. What I am asking, suppose somebody got affected and there is no bed in IQ City, then he himself will go to Sanoka and he will inform नहीं, Sanoka. the moment you are positive, generally the CMOH office will call you. कि আপনার পজিটিভ আছে না, আপনার কি প্ল্যান আছে, কোথায় থাকতে চান, আপনার সিমটম কি, আপনি বলুন না আমার বাড়ির অসুবিধা নেই. সিএমও চিফ মেডিকেল অফিসার. তো আপনার ফোন আসবে কি আপনি কোথায় থাকছেন, কে থাকছেন, কোথায় আপনার, আপনি বলুন না আমার সিমটমগুলো নয়, আমার বাড়ির খুব ভালো সুবিধা আছে, আমি এখানে থাকতে চাই. ঠিক আছে, ওখানে থাকুন, কিছু অসুবিধা হলে আমাকে জানাবেন, এরকম বলবে. ঠিক আছে, না হলে আপনি না ভর্তি হওয়ার দরকার আছে, তাহলে উনি আপনার কাছে অ্যাম্বুলেন্স পাঠাবেন, গভর্নমেন্ট অ্যাম্বুলেন্স. ইউ ক্যানট ট্রাভেল ইন অল দ্য অ্যাম্বুলেন্স, সো দে উইল কল দ্য অ্যাম্বুলেন্স. They will send you the ambulance, you sit in them and wherever they take. Or if you want a private facility, you tell them that I am going to this particular private hospital for treatment. Now, what is your suggestion to residents to have some stay homes or you can say isolation? You must have it. I am telling you the But where we can set up? way cases are increasing. It's very easy to say कि अरे नहीं उसके घर में कोरोना आ गया, उसके वो बहुत आसान है. लेकिन जब आउटबर्स्ट होगा तो no one will be able to handle. And उसके बाद फिर you know. What about Do you suggest? Sir, do you please suggest suggest this that one. we should also Why have not? a Why not, sir? safe home in this society? Why not? Why this community room can be very well converted into. क्या problem क्या है? तो वही पूछ रहा था सर. जो asymptomatic carrier है, they want to isolate themselves. Now for that some caregiver has to be arranged. Yeah, you can take some caregiver, उसको PPE kit पहना के उसमें रखिए. उसके लिए कोई डॉक्टर्स का जरूरत है ना? जैसे my father was positive, so I met him. सुपरवाइज नहीं, उसके लिए हम लोग we have designed a package, home care package करके, which will come to you. IQ City we are working on that. One home care package for 14 days. In that you will get medicine supply, you will get one consultation with doctor every day, dietitian consultation, psychiatric consultation for your family members. We are trying to make that package. So that आपको देने से you can avail से कि 14,000 रुपीज़ या 15,000 का बनाएंगे,
तो उसमें आप वो पे कर दिया, आपको थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर ये सब उसमें है, और डॉक्टर से बात कर सकते हैं। IQ सिटी में ही है। अभी पैकेज बना रहे हैं सर, वी आर इन द ये वो मेडिक्लेम में मिलेगा वो सर मुझे पता है। ये सारे गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट ये कर दिया है। उससे क्या those who are asymptomatic, हाँ can they spread the virus? यस सर, दे कैन, दैट्स फॉर द एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। But WHO has recently told asymptomatic should not be isolated for the purpose of spreading of virus. नहीं, if you test positive, even if you are asymptomatic, you have to get isolated. Simple thing, as simple as that. But recently they have given Sir, they are contradicting themselves every day. एवरी डे WHO is a bad position than us. तो सर आप जो बोले हैं कि जो पैकेज बना रहे हैं वो IQ सिटी के डॉक्टर आके हमें ट्रीटमेंट करेगा? नहीं आएगा नहीं सर डॉक्टर, वीडियो कॉन्फ्रेंस। चेन कैसे ब्रेक होगा? जैसे एसिम्प्टोमेटिक है तो आपको डॉक्टर देखने का जरूरत नहीं है ना, तो फिर आपने अपना अपलोड कर दिया कि मेरा टेम्परेचर इतना है, मेरा ऑक्सीजन इतना आ रहा है, ये करके उसको अपलोड कर दिया। पहले दिन जब आप पैकेज लेने जाएंगे उस दिन आपका बेसिक टेस्ट हो जाएगा, ब्लड सैंपल हो जाएगा और आपका एक्सरे वगैरह हो जाएगा, और उसके बाद जब आप इधर आएंगे तो उसके बाद इधर पैकेज आप लेके तो उसका आपका जो इन्फेक्शन के लिए चाहिए, दवाई चाहिए, वो सारा पैकेट मिल जाएगा आपको। फ्रॉम द होम यू विल गेट अ पैकेट। हाँ, stay at home. And for the stay home, more than one patient can be at home. if you are positive then for this one community hall 3 feet apart you can put as many बाथरूम अगर वगैरह है तो 10-15 लगा सकते हैं, 10 तो लगा सकते हैं। हाँ, बेड तो रहना, बेड तो भाड़ा पे मिल जाता, किराए पे मिल जाता। Bathroom तो common No, we have to नहीं make सर, some तो arrangement. जो बंदा उसको अवेल करेगा देयर विल बी अ चार्ज फॉर दैट पेशेंट। Yes. But can we expect some? I tell you my charges. My father came, got admitted. Since this was not a COVID hospital, so I had to shift him to some other. Otherwise, I would have happily treated him. But then, since he was not this was not a COVID hospital, so I had to shift 35,000 rupees for ambulance to Calcutta. Calcutta में hospital में मतलब जो particular hospital chairman knew me. That's why I got one bed. Otherwise, impossible to get one. ठीक है. उसके बाद then I stayed in a 5-star hotel for good 10 days. तो उसमें उन्होंने एक फ्लोर डेडिकेट किया हुआ था, इफ यू वांट टू सेल्फ आइसोलेट, बिकॉज आई वाज नॉट सिम्टोमेटिक, आई टेस्टेड नेगेटिव ऑल्सो, तो जस्ट ऐसे ही आइसोलेट करना है अपने आप को, तो वह किया था उसमें। फॉर गुड 10 days आई स्टेड इन अ गुड 5-star होटल। सो देर वॉज वन थिंग लाइक वन फ्लोर वॉज डेडिकेटेड, ठीक है, वन फ्लोर वॉज डेडिकेटेड रूम, यू आर नॉट सपोज टू गो आउट ऑफ द रूम, एवरीथिंग विल, देयर वाज अ टेबल आउटसाइड माय रूम, वो खाना लाके उसको जो भी ऑर्डर करेंगे वो लाके रख देंगे। जो 2 बंदे कैटर करते हैं सिंस 1 month दे वर ऑन दैट फ्लोर ओनली, they are not gone. They charge me a premium, but then I got that kind. So if you can do that kind of thing, where you are not in touch with the thing, then that's okay. We have to do it. very costly. Costly तो रहेगा sir, but this point of time money is immaterial. I'm telling you. Money is definitely immaterial. Durgapur steel plant also opened. I think. हाँ, DSP hospital they are starting No, the no, process. not yet open. It has been Proposed and sanctioned. survey has been done. It is in the pipeline. Better. It will be. The chest department has. Yes, chest department has identified. ওটা হয়ে গেছে। না কোভিড সেটা এখনো করেনি। और दूसरा बात है सर, whether you are ready to stay in any facility for good 14 days, क्या आप कोई भी फैसिलिटी में रहने के लिए रेडी है? आई एम नॉट श्योर। क्या समझा नहीं? मतलब कोई भी फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट बोलेगा कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ फैसिलिटी डाले हैं, क्या आप जाके रहने लगेंगे? नहीं रह पाएंगे। नहीं, हर फैसिलिटी इज नॉट लिवेबल, नहीं रह पाएंगे। फिर तो यू हैव टू हैव योर ओन थिंग ना। तो बिना सिम्टम का अगर पॉजिटिव हो गए घर में रह सकते हैं आप? आराम से सर, एकदम 100%। लेकिन उसमें बैरियर रखना है। वो अपने रूम में रहिए, अपना एक अटैच बाथरूम रहिए, एकदम रह सकते, बिल्कुल रह सकते। हम एसिम्प्टोमेटिक है, कैसे जानकारी होगा? नहीं पता चलेगा। कैसे अगर आप किसी के टच में आए हैं या आपका फैमिली मेंबर या कोई दोस्त जिससे मिले जो सिम्टम्स है, तो यू शुड टेस्ट योर, अदरवाइज नहीं मालूम चले। यही तो है मिस्ट्री, तो यही है ना सर। IQ सिटी में है फैसिलिटीज टेस्टिंग करने? हाँ है ना सर, सनका जाता है इधर। Has it been declared as COVID hospital? No, there is nothing like COVID hospital. Now government says everyone has to treat COVID. Yes, you cannot refuse. You cannot refuse. That means with safe home we have to arrange the fooding arrangement also. Fooding will come from your house, no?
फ्रॉम योर होम बाहर टेबल लगा रहेगा, उस पर कोई रख के चला जाएगा. यू हैव डिस्पोजेबल प्लेट्स. बिग डील. Durgapur में how many hospitals are there who are treating COVID? Everyone is treating. Officially, no one can say that we are not treating COVID. Bed मिलेगा. But- bed मिलेगा नहीं. But IQCT is the only real facility. Is the only real facility. Cost क्या है IQCT में? Cost नहीं बता सकता. So it's a per day. How many days you have to stay? What is your severity? Per day कितना है? सर ऐसे फिक्स नहीं है. Depending what is your requirement. इधर क्या स्टेज But 3 तक roughly- माने सीवियर तक रखेंगे. IQCT सीवियर ना फर्स्ट सेकंड स्टेज. All the stages. We are I am into the task force, COVID task force of the West Bengal government. We are into the policy making for the government. But roughly कितना? But what I feel from this discussion এবার বন্ধ হয়ে যাবে, that because all the hospitals should be overwhelmed by patients, এবার বন্ধ we হয়ে যাবে. should have all safe homes in our complex. क्योंकि asymptomatic patients will be more और mildly symptomatic patient will be more than serious patient. तो जिसको हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत होगा वो पेशेंट का नंबर बहुत कम है. बहुत लोग ऐसे हैं जिसको हॉस्पिटल का ঠিক दरकार আছে, नहीं है. এটা খুব ভালোই মেসেজ. Safe home is the need of the hour. नीड ऑफ द और ऐसा नहीं कि वहाँ पे नीचे अगर आप 12th फ्लोर पे रहते हैं और अगर ग्राउंड फ्लोर पे सेफ होम तो वायरस विल कम फ्लोइंग इनटू योर हाउस. ऐसा नहीं होता. আমাদের চিন্তা করতে হবে. हाँ वो लेवल ऑफ केयर इज डिफाइंड एज अ डिफरेंट लेवल ऑफ केयर. सो अभी डीएसपी में व्हाट इज द लेवल ऑफ केयर? L1, L2. और L3 L4 is in Sanaka. So the level of care has been defined in a common man's language, like mild, moderate, severe kind of thing. So mild cases can be very well be treated at home, or maybe a hotel facility, or maybe your ancestral home where you have good space. You can just take your car and go to your property. If you have some other property where no one is staying, if you come positive, you are asymptomatic, you take your car and go there. Spend 2 weeks there. Or if you have some isolated house or some, that's okay, because hospital में हर कुछ Which department we have to go? you have to go to emergency or you have to come to the chest department, respiratory department. That I am headed by me. Bed is not there, they will simply refuse. Sir, that is very imaginary situation. We are not refusing many patients. We are actually really treating patients. They will add bed. You can add bed. We have already added. We started with 15 beds. Now we have 40 beds. 40. 40, including ICU. But IQCT should get some preference. No, that's what for preference IQCT should do those kind of good work also. No, what was done to me, preference is the last thing which comes to my mind. Preference was there, but then the treatment also should be good. We are always there for IQCT residents. That's why we are conducting this. But it's a two-way process. अच्छा, initially we had heard that this disease is not airborne. लेकिन आजकल पेपर में Sir, आ रहा है everything is airborne. Everything is airborne. I'm telling you पेपर this. में आ रहा है कि it is airborne. Depending where you are staying, in what situation you are staying. ठीक है ना? Virus, if someone coughs of virus, there is no wind as such, it will not be airborne. But if you are in a where fan is blowing hard or you have lots of fans going, it is not letting the virus settle on the ground. It is airborne. तब airborne होगा. AC चल रहा है, airborne हो गया. जहाँ भी पॉजिटिव प्रेशर है तो एवरीथिंग इज एयरबोर्न. जो डस्ट जमीन पे होना चाहिए वो यहाँ पे आ जाता है, एयरबोर्न हो जाता है. क्लॉथ्स में वायरस कितना टाइम रह सकता है? सर नो वन नोज फॉर श्योर, बट सरफेसेस का डिफरेंट स्टडीज आर देयर. मिनिमम दे से कि 2 hours to 9 days. क्लोथ्स में हाँ सर नो डिफरेंट सरफेसेस, सरफेस नॉट क्लोथ्स. और क्लॉथ से क्लोथ्स में कम रहता है. तो व्हाट इज योर longest in metallite. मेटल्स आर द लॉन्गेस्ट और वो 9 days तक है. 2 hours to 9 days, 2 घंटे से 9 दिन तक रह सकता है. तो द बेस्ट वे टू डू इज क्लोथ्स के लिए यू शुड पुट इट इन अ डिटर्जेंट वेयर लॉट्स ऑफ फोम इज देयर. लीव इट फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन दैट. अगर फोम से हाथ में मर रहा है तो क्लोथ में भी तो मरेगा ना. What about subsies? हाँ What about subsies? वेजिटेबल्स के लिए Two recommendation. They say that you just wash your hand for 20 seconds, good enough. Or 20 or Right. 30 seconds. राइट. But in case of clothes, they say that you soak it for 2 hours in hot water, then you wash it properly, and then you just go and dry in the sun. So why this much? So No, but that's what I'm telling you. So there are that's why I'm asking you, because you explained it Right. beautifully that the ladder that disintegrates the coat, virus coat, and the virus doesn't replicate. right. So the same thing should happen with the clothes.
Right. And if you just soak it for an hour, that should be good enough. Good enough in a good form. But then what the problem is, when you are washing your hands, you are consciously making sure that your foam is in every corner of the hand. But when you are dipping your clothes, you are not putting all the corners of your clothes. Then you wash it. Definitely, then you wash it. That's what. That also in a shirt, so many corners, so many spaces are there. Do you consciously wash every corner of the shirt? No. But hand when you wash, that's why I say to be on safer side. Let it just soak into the foam for a longer period of time. Huh? Surface area is Surface more. Surface area is more. Washing of It clothes depends is on constant. porosity. If you do it manually, definitely you may not be able to reach in every corner. Right. If you do it in a machine, it will reach. Better uniform cleaning will. So basically the funda is that the virus should be exposed to the foam. Hand you cannot wash for 1 hour because you'll have another disease. So that is one. Can we detect asymptomatic cases? You cannot, sir. That is the tricky part. That is the asymptomatic. That is the tricky part. Doctor, हाँ sir. so far we are having the idea somebody experienced corona and get rectified, he may not have again. The immunity. Immunity. So the thumb rule in any infection that you develop some immunity. Any infection, not only corona. Thumb rule is कि आपको एक बार infection हुआ, you should not get it again, at least soon. But immunity virus में भी है, इस कोरोना में भी है, but for how long you don't know. But at least 1 to 2 months, 1-2 महीने immunity रहता है. That has been proved. But longer than 2 months. वैक्सीन का भी उससे ज़्यादा स्टडी भी नहीं स्टडी नहीं हुआ, अपना टाइम ही नहीं बिताया लोगों ने, तो अभी कह नहीं सकते, लेकिन 1-2 महीना तो रहता है. Now there is something about the vaccine. What is हाँ, vaccine is Prospect. vaccine. There are lots of companies which are good companies are coming with the vaccine. It will hit the market. I was in touch with original researchers from Germany, from Pfizer company. So it will hit the market in approximately October end or November, the global market, and it will be available in India around December. Then when you give vaccine, it takes two months to start acting. So your even if you get it in December, your immunity starts in February. what about Covaxin? कोविड कोवैक्सीन को आया तो नहीं है ना सर? आया तो अभी तक कुछ नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ भी तो सब कुछ न्यूज़ है. नहीं, रशिया बोल रहा है ये 10 अगस्त से चालू कर रहा है. First week. जब कर देगा उस दिन बात कर लेंगे. It's a one up.